बहुत समय बाद दिख रहे हो, कैसे हो? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं एकदम बढ़िया हूँ। अभी रिकवर करा है अभी इंजरी से अपनी। सो फाइनली जिम आई थी। हैड माय फर्स्ट जिम सेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बस उसके बाद अभी थोड़ा बहुत कॉफ़ी पीकर। ओके, सो इट्स अ न्यू ईयर, क्या कुछ न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया था? क्या आप वर्क कर पा रहे हो उस रेजोल्यूशन पे? डेफिनेटली अभी वर्क करना शुरू किया है बिकॉज एक महीना तो मैं आई वॉज ऑन रेस्ट बिकॉज आई हैड अ फ्रैक्चर्ड हैंड। तो वो अभी रिकवर हो गया है एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन। Okay, so what are your upcoming projects and which project has been lined up for you? There are two music albums in the pipeline. There's something coming up for the OTT platform as well. So music albums तो I guess 1-2 महीने में release हो जाएंगे. So you guys will come to know. Okay, so talking about your career graph, you have done historic thing also. You have done filmy thing also, family thing, which I say. So क्या कुछ आप आगे चलने में करने में मजा आएगा? क्या देख रहे हो आप? I would love to do something thrilling, a thriller. मास्क उतार दूँ? अरे मास्क नहीं उतारना, कोरोना बहुत फैल रहा है। मास्क नहीं उतारना। So yeah, I'm looking forward to doing something thrilling. Fantasy based होगा तो better होगा because I always love the Disney princess vibes. So कुछ challenging role हो, कुछ अच्छा role हो, I would definitely love to take And that your role. new music is also coming up. So कब आने वाला है? कुछ कहने पाओगे? It will be out next month most probably. And एक और music album है that will be out in like March, April. So that's in the pipeline. Okay, so Big Boss 15 is also going on. So are you following Big Boss 15? My mom is following Big Boss 15. मैं उतना नहीं देख पाती, but mom जरूर देखते So हैं. क्या कुछ मम्मी ने कहा? कुछ she said something about it? Um, so she basically doesn't have a favorite. उनका favorite हर week switch होता है. कभी तेजस्वी होती है, कभी करण होता है, कभी प्रतीक होता है. So she keeps switching and she keeps telling me about Big Boss. And how you're looking forward for 2022? I'm looking forward to it as a year of growth, a year of new projects, challenging projects, and a lot of love and happiness around. Wishing everyone a good health, and I hope Corona jaldi. Okay, so one of your close friends, Siddharth Nigam, has recently completed 10 million Yes. followers on Instagram. So what do you want to say about it? Many congratulations, Siddharth. First of all, I'm sorry I couldn't come to the surprise party because I was shooting. But yes, I mean, we live in the same building, so I obviously congratulated him. And may he keep growing. He deserves every bit of it. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you guys. एक मिनट नहीं यहाँ पर वो थोड़ा सा मास्क Thank you guys. Thank you. बाइक नहीं होगा बाइक मैम रुक जाइए Ma'am, रुक जाइए. How are you, ma'am? I'm good. How are you? All good. चलाना लेना हमारी पुतना एक स्टेप एक स्टेप नीचे आ जाओ, ma'am. बस ऑडियो के कैमरे में नहीं हो रहे हैं कैमरा. Okay, ma'am, good to see you. It's really difficult to spot you. आप बहुत समय बाद दिख रहे हो, कैसे हो? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा. मैं एकदम बढ़िया हूँ. अभी रिकवर करा है अभी इंजरी से अपनी. सो फाइनली जिम आई थी. हैड माय फर्स्ट जिम सेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो बस उसके बाद अभी थोड़ा बहुत
कॉफी पीकर. ओके सो इट्स अ न्यू ईयर, क्या कुछ न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया था, क्या आप वर्क कर पा रहे हो उस रेजोल्यूशन? डेफिनेटली अभी वर्क करना शुरू किया है बिकॉज 1 महीना तो मैं आई वाज ऑन रेस्ट बिकॉज आई हैड अ फ्रैक्चर्ड हैंड. तो वो अभी रिकवर हो गया है एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन द न्यू ईयर रेजोल्यूशन. Okay, so what are your upcoming projects and which project has been lined up for you? There are 2 music albums in the pipeline. There's something coming up for the OTT platform as well. So music albums तो I guess 1-2 महीने में release हो जाएंगे. So you guys will come to know. Okay, so talking about your career graph, you have done historic thing also. You have done filmy thing also, family thing, which I say. So क्या कुछ आप आगे चलने में करने में मजा आएगा? क्या देख रहे हो आप? I would love to do something thrilling, a thriller. मास्क उतार दूँ? अरे मास्क नहीं उतारना, कोरोना बहुत फैल रहा है. कम हो गया, मास्क नहीं कम हो गया. उतारना. So yeah, I'm looking forward to doing something thrilling. Fantasy based होगा तो better होगा because I always love the Disney princess vibes. So कुछ challenging role हो, कुछ अच्छा role हो, I would definitely love to take And your that. new music is also coming up. So कब आने वाला है, कुछ कहने पाओगे? It will be out next month most probably. And एक और music album है that will be out in like March, April. So that's in the pipeline. Okay, so Big Boss 15 is also going on. So are you following Big Boss 15? My mom is following Big Boss 15. मैं उतना नहीं देख पाती, but mom जरूर देखते So हैं. क्या कुछ मम्मी ने कहा, कुछ she said something about it? So she basically doesn't have a favorite. उनका favorite हर week switch होता है. कभी तेजस्वी होती है, कभी करण होता है, कभी प्रतीक होता है. So she keeps switching and she keeps telling me about Big Boss. And how you are looking forward for 2022? I'm looking forward to it as a year of growth, a year of new projects, challenging projects, and a lot of love and happiness around. Wishing everyone a good health, and I hope Corona jaldi. Okay, so one of your close friends, Siddharth Nigam, has recently completed 10 million followers on Instagram. So what do you want to say about it? Many congratulations, Siddharth. First of all, I'm sorry I couldn't come to the surprise party because I was shooting. But yes, I mean, we live in the same building, so I obviously congratulated him. And may he keep growing. He deserves every bit of it. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, guys. एक मिनट नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मास्क